Transfection of embryonic stem cells. Embryonic stem cells, they can be commonly abbreviated as ES cells. So these cells, they can also be a source for transfection. First, briefly we can focus that what are embryonic stem cells. Embryonic stem cells, they are derived from the inner lining or inner mass of the blastocyst. कि जो blastocyst का जो inner mass होता है cells का, उससे जो हम cells लेते हैं for further propagation, they can be called as embryonic stem cells. ब्लास्टोसिस्ट के बारे में मैंने बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके जो आफ्टर ए फ्यू डेज के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है आफ्टर सेल डिवीजन ऑफ द एग, it is called as the blastocyst. For example, in case of human, this structure may be formed after 4 to 5 days and the cell number may be above 100. And in case of human, the cell size, it may be around 12 micron meter, and in case of mice, it may be 8 micron meter. And when the inner mass of cells is taken from the blastocyst, then it can be cultured on artificial medium, and then they can be serially propagated with the passage of time, so that they can be maintained after many cell division. So such a type of cell lines, they may be called as embryonic stem cells. Embryonic stem cells, they are also a good source to transfer foreign DNA into the embryonic cells. Once the foreign DNA it has been transferred during the growth cycle, then again they can be implanted into the foster mother, where the replication process it can be started, so that the foreign DNA they can be selected on the basis of some visible phenotypes. केस में हम कुछ ऐसी phenotype यूज करते हैं जो कि visible हो, so that they can act as a selectable marker. अगर हम इसको कंपेयर करें माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक से, तो उसमें जो एग्स हैं या ओवोसाइट्स हैं उसको हमें स्क्रीन करना पड़ता है बाय यूजिंग टेक्निक्स लाइक द PCR amplification or some bloating techniques have to used for the detection of the foreign DNA. But here, in case of the embryonic stem cells, some visible phenotypes they can be used as a selectable marker. Now here, there is also a possibility that not all the cells in the embryonic stem cell lines they may be transfected. कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं वो सारे के सारे ट्रांसफॉर्म हो जाए. कुछ सेल्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कुछ सेल ट्रांसफॉर्म नहीं होते. तो इसमें दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि काइमेरिक एम्ब्रियोस बनते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया कि सम टाइम अगर पार्शियल ट्रांसफेक्शन हो सेल्स की, कि कुछ सेल में ट्रांसफेक्शन हो बाकियों में ना हो, तो ऐसी सूरत में कुछ एम्ब्रियोज बनते हैं जिनको हम मोज़ेक एम्ब्रियो कहते हैं. और जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में जो एम्ब्रियोज बनते हैं तो उसमें यह पॉसिबिलिटी है कि वो काइमेरिक एम्ब्रियोज हों, यानी कि उसमें दो सोर्सेस से DNA आ सकता है. Now what is the difference between mosaic embryos and chimeric embryos? Here we should differentiate between these two type of structures. If we have a look on the genetic basis of the mosaic embryos, we can say that here the cells they may be from a single source, from single organism, single ancestor, and some they have transfected, other they remain unaffected. And the alteration in genetic material, either as a result of transfection or mutation, it may be there, but here the single ancestor is involved,
और सिंगल एंसेस्टर से हम सेल लेते हैं. Whereas in case of embryonic stem cells transfection, कि जब ट्रांसफेक्शन हो जाती है सेल्स की, ES सेल्स की या एम्ब्रियोनिक सेल्स की, तो हम उसको जो सिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट की जो कैविटी है उसमें हम सेल्स को शिफ्ट करते हैं. तो इस तरह से दो सोर्सेस से सेल हमारे पास आ जाते हैं. So the cells are from two ancestors, so that two different genetic makeup they can combine in case of chimeric embryos. So in case of embryonic stem cell lines, simply we can say that ES cells, they are transfected, they are transferred into the cavities of the blastocyst, so that cells they are integrated into the blastocyst, so that two type of ancestral cells are there that result in the formation of chimeric embryos.